नमस्कार, मैं नयनमणि कलिता। हम लोग असम से है। मेरा बच्ची का स्कोलोसिस का प्रॉब्लम था। वो स्कोलोसिस का प्रॉब्लम हमको पता लगा था 2018 में। शुरुआत में हम लोग एम्स में आया था, तो एम्स में हमको सर्जरी के लिए बोला, लेकिन 2 साल बाद में डेट मिला था तो मैंने नहीं कराया था। इसके बाद सेकेंड टाइम हमने जेपी हॉस्पिटल में दिखाया, जहाँ पे डॉक्टर निखिल सर और डॉक्टर सौरभ सर ने पहला इनका स्कोलोसिस का ग्रोइंग रॉड का सर्जरी कराया। सर्जरी के बाद हमने 5 टाइम इसका एक्सटेंशन कराया ग्रोइंग रॉड। और इस जब फाइनल सर्जरी का टाइम आया तब हमको डॉक्टर सौरभ सर ने रेफरेंस दिए, बोले कि डॉक्टर निखिल से मणिपाल हॉस्पिटल में सर्जरी कराना है हमको। फिर मैं घर से डॉक्टर निखिल से बात किया, तो उन्होंने हमको एडवाइस किया कि आप यहाँ पहले आइए, फिर हम लोग इनका MRI वगैरह करा के देखते हैं, फिर आगे प्लान करूँगा कब सर्जरी करना है कब नहीं करना। फिर हम यहाँ पे 16 जून को मणिपाल हॉस्पिटल आया, डॉक्टर से मुलाकात की। उन्होंने हमको बहुत अच्छे तरह से समझाया इसका बारे में, सर्जरी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सर्जरी से हमको क्या क्या सावधानता लेना है नहीं लेना है, इसका बारे में सब कुछ समझाया, मोटिवेशन दिया। इसके बाद हमने एग्री हुआ सर्जरी के लिए। अभी सर्जरी 9 जुलाई को सर्जरी का प्लान किया और 9 जुलाई को सर्जरी हो गया, सक्सेसफुल सर्जरी हो गया। इससे पहले हमारा बच्चा बिल्कुल बैंड हो गया था और आज 100% बच्चा सीधा हो गया, स्ट्रेट हो गया है, मतलब अच्छा है इसमें कुछ है इसकी। डॉक्टर निखिल ने हमको बहुत अच्छी तरीके से एडवाइस दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, अच्छा से हर चीज हमको गाइड किया। और मणिपाल हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, A to Z मणिपाल हॉस्पिटल में हमको बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर निखिल बहुत बढ़िया डॉक्टर है स्वाइन के लिए, हमको ऐसा लगता है। बहुत हमको मदद किया डॉक्टर निखिल ने। इस मणिपाल हॉस्पिटल में आके हमको यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमारा मणिपाल हॉस्पिटल का सर्विस बहुत बढ़िया है। So Munni Kalita is a 13-year-old girl. She's from Assam. She has scoliosis and she was operated first for scoliosis in 2019. She underwent growing rod placement and she was undergoing distractions regularly. The last distraction was done for her around 2 years ago. And now she came to me. The girl was growing in age. She is now 13. And she was stepping from her childhood into puberty and next looking forward to the adulthood. The father wanted to ask me what was the next step because the distractions had been stopped for a long time, and was it worth doing another distraction? So the father had consulted a few other hospitals. He went down south, he went to Bangalore, and he didn't get a proper answer. So when he came to me, I looked at the scans, I investigated the child, and I told them that the girl needs a final correction, and she was right. It was right at this age. We investigated the girl further, and I explained everything. The father understood everything clearly. There were a few challenges in this case. The first was, of course, that it was already an operated case, so it needed more careful handling and it needed more proper planning because an operated area, when it needs to be revised, it can be a bit challenging. The second was that the girl had her spinal cord which was tethered, so it needed a release, for which I took the help of the neurosurgeons, Dr. Anurag Saxena and team at this hospital. And finally, the biggest challenge for us was the low body weight of the child. She was 13 years old but weighed only 19 kilograms. With this low body weight, it becomes a challenge for the anesthetist, for the surgeon to make the patient ready for the surgery because we have to look at the blood loss, we have to look at the strength of the bones and other factors. So finally, after all the clearances, which includes the anesthetist, the pulmonologist, which
which is the chest physician and a pediatric cardiologist. We planned the surgery. The surgery was done successfully. It took around 8 hours to do both my surgery, my part, which includes correcting the spine, and then the neurosurgical part, which includes detethering the cord. The girl is now 3 centimeters taller. Her spine is straight. She feels much better. She started walking the next day and has been discharged. And the girl and the family is very happy.